Hello everyone, my name is Amit Antil. I am here to present my presentation on CCD, that is Cafe Coffee Day. CCD is a coffee brand. After Starbucks, it is the second most selling brand in India, which sells their coffee. Uh, the data of CCD includes around 11,000 rows and 17 columns. Now coming to the dashboard, I uh, I divide the whole report on four regions, that is East, West, North, and South. East India, West India, North, and South India. Coming to the first chart, that is sales by this shows the sales of 2023, 24, and 25. This data is of 3 years, 2023 to 2025. So Amit, 24 में क्या growth percentage है compared to 23? Growth percentage, so the growth doesn't go upward and doesn't go down. It is a stable business. So it is a stagnant business. कोई growth नहीं है, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ. Yes. 1.4 million, 1.4 million, 1.4 million. Yes, sir. ऐसा ही है. ऐसा हो सकता है किसी अच्छा उसमें में आना They are small 25 amount में of आना changes. 25 में 2020 से अच्छा ठीक है. We make strategies for it to go upward, to take growth in upward direction. The total revenue of the Cafe Coffee Day is 4.26 million of 3 years. This is the 3-year revenue. The total orders are 10,000 and total stores in whole India is 899. And the products the products given by the CCD are mainly these are 10 products. Total these are 10 products. These includes the beverages that are coffees like cappuccino, latte, and cold coffee. These are the beverages, and foods includes food includes the cold drinks and cakes, cupcakes, and many more. This includes in food. This chart shows the top 5 states. This chart shows the sales of top 5 states in India. What are you saying? That is the top selling state is Uttar Pradesh, then West Bengal, Tamil Nadu, Delhi, and Karnataka. The region of UP is the most selling state is because UP has maximum states in compared to all cities in India. UP has the maximum states. UP has a maximum state. So how many state UP has? How many state UP has? Maximum cities. Cities. How many cities UP has? How many cities? 78. 78. ठीक है. So where is the head office of CCD? Who is the chairman of CCD? कोई बात नहीं, आगे बताओ. Then this chart shows the sales by category. There are, as I told, there are two categories: beverage and food. The beverages has the highest sale than food category. This is because beverage CCD is known for the coffees. That's why beverages have the highest sale. And these are the top 5 product sales of CCD. On the topmost there is latte, because CCD have their maximum selling. So you are talking about the across
इंडिया। अक्रॉस इंडिया, जो अक्रॉस सेल है उसमें टॉप परफॉर्मिंग जो है वो लाते हैं। Yes. ठीक है, ठीक। After coming to this chart, अमित थोड़ा लाउड बोलो आप, this is लाउड the लाउड बोलो आप। this shows the location of the stores that in 899 total stores there are the sales coming from mall stores is 32%, 34%, and from airports the sale is 33%, and from high street stores there is 32.54%. These are the sales by store locations. Then coming to the next chart, this shows the month-wise sales of the total sales of the chart, and this line shows the number of orders in a particular month. Here the total orders is 852 in January month, and the sales of January is 3,56,101. August has the highest selling. August is the highest selling month of the total year. तो ये 1 ईयर का डेटा है, क्या सर? 1 ईयर का डेटा, कितने साल का डेटा 3 है? ईयर का डेटा सर। सो तो हर साल यही ट्रेंड रहता है, अगस्त में ऊपर चला जाता है सेल और फरवरी में नीचे आता है। सर ये टोटल 3 इयर्स का टोटल करके है। ये टोटल ट्रेंड है, हाँ, मतलब तो ये हर साल का अलग अलग भी तो हो सकता है। चलो मुझे यही ट्रेंड ओपन करके दिखाओ पहले साल का। फर्स्ट ईयर का सर। हाँ, जो आपने भी मंथ वाइज परफॉर्मेंस दिखाया ना, तो मंथ वाइज परफॉर्मेंस इन अ फर्स्ट ईयर क्या था? मतलब यही ट्रेंड कॉपी हो रहा है, फरवरी में डिप गया है, अगस्त में सेल अप गया है। एक बार ओपन करके दिखाओ इसको। सो अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये हर साल का सिनेरियो है, और माइट भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये एक सिंगल 1 ईयर का सिनेरियो है जहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। Yes. कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको फिर। आगे बताओ आप। This chart shows the customers, how many customers are regular and how many are new customers. They are new customers is 50%, 50.23%, and regular customers are 49.77%. Sales by payment, this shows the sales the customer done, that is they done in cash, in UPI or by card. The customers prefer the cash, that's why the ये cash डेटा is कहाँ से high. लिया है आपने? चैट जीपीटी से लिया है या केगल से लिया है? सर ये कैगल पे अवेलेबल नहीं था तो चैट जीपीटी से। देखो चैट जीपीटी ने इतना अच्छा आपको डेटा दिया है, सारे बाइफर्केशन इक्वल है, ठीक है। एग्जिस्टिंग कस्टमर वो भी इक्वल, नया कस्टमर वो भी इक्वल, 50-50%। पेमेंट मोड आप आ जाओ तो कैश 2% है, मतलब 50% है 2 मिलियन,
और UPI 1 मिलियन और कार्ड 1 मिलियन, तो क्यूमुलेटिव 2 मिलियन। तो ये भी अगेन 50-50 हो गया कैश के कंपेयर में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इस सब से चीज़ों से आपको कुछ मिलेगा नहीं अमित। आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि मैंने एक डैशबोर्ड बना दिया, उसको प्रेजेंट कर दिया। आपने की फाइंडिंग क्या निकाली? ये चैट जीपीटी तो आपने आपको वो डेटा दे देगा। आज मैं आप चैट जीपीटी को बोलूँगा कि मुझे कॉम्प्लिकेट डेटा दे दे, कॉम्प्लिकेट दे देगा। मैं बोलूँगा इजी डेटा दे दे, इजी दे देगा। आप चैट जीपीटी को बोलो कि मेरे को इस तरह से परफॉर्मेंस निकाल के दे दे, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से वो डेटा जनरेट कर देगा और आपको बता देगा ये परफॉर्मेंस है। ये आप कर क्या रहे हो? आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। मेरे को अगर बच्चे को शुरुआत में ही आप कैलकुलेटर पकड़ा दोगे ना, तो बच्चा कभी कैलकुलेशन सीखेगा ही नहीं, वो कैलकुलेटर पे लगा रहेगा। आइडियली आपको इस टाइम पे, जब तक आप ट्रेनिंग पे हो, तब तक किसी भी बच्चे को चैट जीपीटी ये सब चीज़ों की हेल्प ही नहीं लेनी। अपना खुद का बिजनेस एक्यूमेंट्स यूज़ करना है, एनालिटिकल स्किल्स, लॉजिक्स यूज़ करने हैं। अगर हम चैट जीपीटी की प्रोजेक्ट बनाने में ही हेल्प ले रहे हैं, तो फिर हम इनसाइट कैसे निकालेंगे अमित? देखो ना, आप बताओ, इसमें सारी चीज़ें तो उसने इक्वली डिवाइड करके रखी हैं। इससे पहली वाली जो स्लाइड थी उसमें भी इक्वली उसने बाइफरकेट करके रखा था। इससे पहली वाली स्लाइड जाना। अब यहाँ पे आप देखो सेल्स बाय स्टोर लोकेशन, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है? 34, 32, 33। आप ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देख लो, कितना परफॉर्मेंस है? 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन, 1.4 मिलियन। या तो हम लोग आपको निकाल के दें, प्रोजेक्ट चलेगा। संजना कर सकते हैं, ऐसा करें। हम तो इसलिए इनको बोलते हैं कि आपको जिस पे इंटरेस्ट है, जिस भी हेल्थ यार इंटरेस्ट का मतलब ये थोड़ी कि आप परचून की दुकान का किराया वो लेके आ जाओगे प्रोजेक्ट यार। हाँ, किराने स्टोर का प्रोजेक्ट लेके आ गए आप। अमित आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। सर ये इस तरह से मत करो आप, ये सेकंड प्रेजेंटेशन है यार। एसक्यूएल पे हम प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। एसक्यूएल में जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। आप ये समझ सकते हैं, दिस इज़ अ लास्ट प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है अपने कैलिबर को शोकेस करने का, इन्हेंस करने का। ठीक है ये ना। what is data modeling in Power BI and how it's work? Data modeling shows the relationship between the tables. We can work with different tables on the basis of their relationships. Relationships name, how will it connect the table with another table? There are four types of relationships, that is one to one, one to many, many to one, and many to many. So how will we describe this? What is one to many? In one to many, in first table there are unique values. In whole table there are unique values, and in second table there are duplicates values. Okay, and what is RLS? RLS is a row level security. By RLS we can strict the data so that the not every user can see the data. And what is Power Query in Power BI? Power BI, in Power Query we can edit or we can clean the data. What is steps required for data visualization in Power BI? Data visualization. In Power BI, yes. What is steps required? Firstly, we have to import the data. From where you can import the data? From get data, we can import the different types of Can files. you tell us the sources name, like 5 to 6 source name? CSV file, Excel file, Power BI, sorry, not Power BI, Excel file, CSV, text file. Okay, go ahead. And after importing the data, we have to analyze the data, and we have to clean the data in Power Query Editor. After cleaning the data, we have to analyze whole data and then go in the dashboard and have to make the charts. What is data cleaning and why it is required? Data cleaning, in data cleaning we format the columns, we trim the extra spaces between the text,
we remove the blanks so that the analysis of the data can be done properly and right. Okay, one more and last. So what is data transformation? Data transformation. Data transformation is the process of analyzing the old data. Analyzing the Data. ठीक है ओके Thank you. किसी के पास और कोई क्वेश्चन है